सरकार जब ये कहती है हम विकसित भारत बनेंगे, अगर विकसित भारत में पेपर लीक होंगे तो रोजगार नौकरी कौन देगा? तो एक बात तो क्लियर है, बीजेपी इस देश में एक भी एग्जाम नहीं करवा पाती क्योंकि ये अनपढ़ और गंवार लोग हैं, इन्होंने खुद कभी एग्जाम दी नहीं है। ये रिकॉर्ड बनाई है प्रश्न पत्र लीक होने का और छात्रों का भविष्य को अंधकार में ढकेलने का। बात यह है कि सरकार को ये एक्सेप्ट करने पे भी मनाही हो रही है कि यह गंभीर मामला है। आप तो इतने हल्के में इसको ले रहे हो, जिसका परिणाम है कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। Another competitive exam, another paper leak, and another 6 lakh dreams put on hold. Just 24 hours before the Maharashtra Teacher Eligibility Test or the TET was scheduled to be held, the Maharashtra State Council of Examination postponed the exam after parts of the question paper were allegedly leaked. According to the police, around 6 lakh candidates were expected to appear for the examination on June 28 at 1,728 centers across the Maharashtra. The breakthrough came after Bhiwandi police received intelligence about a suspected paper leak racket on June 25th. So instead of making immediate arrest, police chose to play along. For 2 days, they posed as buyers interested in purchasing the leaked question paper, staying in constant contact with the suspects. They allegedly offered a hefty sum for the leaked question paper, and investigators say all the 4 accused had traveled from Delhi to Thane to complete the deal. But as the transaction was about to be finalized, officers moved in and arrested 3 of the accused on the spot, while efforts are underway to trace and apprehend the 4th accused. What has surprised the investigators is the profile of those arrested, as Rajiv Kumar is a Bachelor of Science graduate, Akash Kumar holds a degree of Bachelor of Commerce degree, and Dheeraj Kumar is a Bachelor of Arts graduate. Police claim the accused had brought the TET question paper from Delhi and were preparing to sell them for nearly Rs 1.5 crore. During the operation, officers recovered mobile phones, cash, and 4 sets of TET question paper meant for the examination scheduled the very next day. Officials from the Maharashtra State Council of Examination later examined the recovered papers and confirmed that they matched the original question papers. Following the verification, a case was registered at the Bhiwandi police station. यहाँ के डीसीपी जोन 2 पवन बंसोड़, इनको एक गोपनीय बातमीदार के तहत एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कल जो पेपर होने वाला है वो पेपर बेचने के लिए कुछ लोग आज भिवंडी शहर में कोनगांव एरिया में आने वाले हैं। उन्होंने पूरी टीम तैयार की, डिकॉय तैयार किया, ट्रैप लगाया। तो सुबह 11 बजे के दरमियान हमें उनके टीम को मालूम हुआ कि 3 लोग यहाँ पे ये पेपर बेचने के लिए आए थे। उनके पास बातचीत होने के बाद उनके सर्च में कुछ पेपर्स मिले जो कल की जो एग्ज़ाम है वहाँ पे जो पेपर आने वाले थे वो उनके ताबे में मिले। शिक्षण विभाग के जो सीनियर ऑफिसर है उनको कांटेक्ट करने के बाद ये वेरीफाई हुआ, उन्होंने भी वही कहा, रिपोर्ट दिया कि ये वही पेपर है। इसलिए उन लोगों को हिरासत में लिया है, पेपर जब्त किया है। उनके पास से कुछ मोबाइल, कुछ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये भी जब्त किए हैं। इसमें ये कार्रवाई में अभी तक 3 लोगों को हिरासत में लिया है। ये 3 लोग दिल्ली से यहाँ पे आए थे। उसमें से एक जो आरोपी है वो हरियाणा का है और 2 आरोपी बिहार के हैं। Minutes after the exam was postponed, the opposition launched a sharp attack on the government. Congress labeled the BJP as a paper leak government. Aam Aadmi Party alleged that the paper leaks have become the new norm under the BJP government. AIMIM chief Asduddin Owaisi blamed the government's incompetence for the crisis, while Congress leader Rahul Gandhi described the incident as the theft of the future of India's youth. जो शिक्षक ये टीईटी देती है वो शिक्षकों की ही ये टीईटी, मैं समझता हूँ उसका पेपर लीक होना बड़ी महाराष्ट्र सरकार की बेइज्जती इसके माध्यम से हुई है। इसलिए ये जो सरकार है इसमें दम नहीं, ताकत नहीं, सादा पेपर टीईटी का संभाल नहीं सकते। ऐसा सरकार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का है, इसका हमें खेद है। जब तक बीजेपी की सरकार है तब तक पेपर लीक होते रहेंगे। देश में एक ही दल है जो संकट पैदा कर रहा है, वो है बीजेपी। बीजेपी हटेगी तो संकट दूर होगा। तो एक बात तो क्लियर है, बीजेपी इस देश में एक भी एग्जाम नहीं करवा पाती क्योंकि ये अनपढ़ और गंवार लोग हैं, इन्होंने खुद कभी एग्जाम दी नहीं है, इसलिए ये लोग खुद कोई एग्जाम करवा नहीं सकते। Responding to the controversy, the Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde termed the leak
highly outrageous and said he would recommend invoking the Maharashtra Control of the Organized Crime Act against those responsible. Chief Minister Devendra Fadnavis has ordered the formation of a special investigation team and directed officials to ensure strict action against everyone involved. As the investigation gathered pace, the probe has expanded beyond Maharashtra. SIT teams have been dispatched to West Bengal, Bihar, Delhi and Haryana to trace what investigators believe is a larger interstate paper leak network. Meanwhile, Bhiwandi court has remanded the 3 arrested accused to police custody till July 6, giving officials more time to trace others involved in the paper leak. A fresh date is yet to be announced for the TET exam, leaving thousands of candidates once again waiting for another opportunity. The Maharashtra TET paper leak isn't just about one cancelled examination. It's about a recurring crisis that continues to shake the confidence of millions of students. Only recently, the country witnessed the NEET UG 2026 paper leak, an examination that had to be cancelled and conducted again after allegations of paper leak sparked nationwide outrage. For students, every paper leak means far more than a postponed exam. It means months of preparation wasted, careers pushed into uncertainty, and trust in the examination system eroded once again. The challenge now is not just to punish the accused, but to restore the trust in the examination that shaped the future of India's youth.